सो आज आम गोटे वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक देखा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। लास्ट क्लास में देखी व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चार्जेस, व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज डिस्कस करते। आज हम देखा व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सो आम जाने जे इलेक्ट्रिक चार्ज इज टू टाइप्स ऑफ, गोटे पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। सो तार किसी गोटे प्रॉपर्टीज अच्छी से गुड़ा विषय आम आज डिस्कसन करवा। सो इलेक्ट्रिक चार्ज which has been described to be of two types, positive and negative, possesses the following properties। कौन प्रॉपर्टी अच्छी? फर्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज डज नॉट possess any direction, so it is a scalar quantity। चार्ज रो किसी डायरेक्शन नहीं, से चार्ज होचे स्केलर क्वांटिटी। आम जाने स्केलर क्वांटिटी कौन, वेक्टर क्वांटिटी कौन ना, जो फिजिकल क्वांटिटी केवल मैग्नीट्यूड अच्छी, जो फिजिकल क्वांटिटी की एक्सप्रेस करने, जो फिजिकल क्वांटिटी की एक्सप्लेन करने, डेमोन्स्ट्रेट करने, बुझेवाई केवल मैग्नीट्यूड दरकार, आम कह स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम एगुड़ा सब हूँ स्केलर क्वांटिटी। आ जो फिजिकल क्वांटिटी की एक्सप्रेस करने मैग्नीट्यूड दरकार, आउ डायरेक्शन मत दरकार, आम कह vector quantity। So the physical quantity which requires only magnitude for its complete specification is known as scalar quantity। So the physical quantity which requires both magnitude and direction for its complete specification is known as vector quantity। जो फिजिकल क्वांटिटी की एक्सप्लेन करने केवल मैग्नीट्यूड दरकार, ताको हम कहवा स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एगुड़ा सब हूँ स्केलर क्वांटिटी। सेमती जो फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्लेन करने मैग्नीट्यूड मत दरकार, आउ डायरेक्शन मत दरकार, ताको हम कहवा वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम एगुड़ा सब हूँ वेक्टर क्वांटिटी। So charge does not possess any direction, so charge is a scalar quantity। जेहेतु चार्ज रे किसी डायरेक्शन नहीं, से एटा गोटे स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज कौन ना, टोटल चार्ज गिवन टू ए बॉडी मस्ट बी एडेड अल्जेब्रिकली। आम जो गोटे बॉडी की चार्ज दबा, विभिन्न प्रकार चार्ज दबा, पॉजिटिव चार्ज दबा, नेगेटिव चार्ज दबा, तार टोटल चार्ज केते हबो आमे ताको ऑर्डिनली ऐड कर दबा, ताको अछि एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। मन गोटे बॉडी की आमे 10 कूलम चार्ज दले, प्लस 10 कूलम चार्ज दले, तापर प्लस 5 कूलम चार्ज दले, तापर -2 कूलम चार्ज दले, -3 कूलम चार्ज दले। बर्तमान तुम पचारियो बॉडी रो चार्ज केते कौन दियाला बॉडी की? प्रथमे प्लस 10 कूलम चार्ज दियाला, तापर प्लस 5 कूलम चार्ज दियाला, तापर -2 कूलम चार्ज दियाला, -3 कूलम चार्ज दियाला। तुम पचारियो से बॉडी रो चार्ज केते, बॉडी रो चार्ज केते हबो ना, +10 + 5 + 15 से -2 -3 -5 + 15 -5 इक्वल टू +10 कूलम। बॉडी रो चार्ज केते? +10 कूलम। So it is additive nature charge। Total charge given to a body must be added algebraically। So if a body is given a positive charge Q1 and a negative charge Q2, then total charge acquired by the body is given by Q equal to Q1 plus minus Q2। सो ताको पॉजिटिव चार्ज Q1 दियाला, नेगेटिव चार्ज Q2 दियाला। सो Q1 प्लस Q2 हम ताको ऑर्डिनली ऐड कर देले, और Q इक्वल केते हबो? Q1 प्लस और माइनस माइनस Q2। एटा होछ तो कोन टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी। So the total charge on an extended body is equal to the algebraic sum of charges located at different points or in different regions of the body। एटा होछ तमरो कोन एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। नेक्स्ट नंबर 3rd प्रॉपर्टी होछ तमरो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी नंबर 3 हैला तमरो कोन quantization of charge। That is a very important property। So experiment shows that the charge carried by a body is not continuous, but it is an integral multiple of certain smallest unit of charge।
चार्ज टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी रो चार्ज टा केवल कंटिन्यूअस नेचर नुह बॉडी रो चार्ज सब डिस्क्रीट नेचर आम गोटे बॉडी रे चार्ज अच्छी माने से बॉडी रे किछि केते इलेक्ट्रॉन लॉस अच्छी बा गेन अच्छी आम तो कैलकुलेट कर परिया से डिस्क्रीट नेचर discrete nature of charge. So total charge carried by a body is not continuous. It is an integral multiple of certain smallest unit of charge. That is Q equal to total charge of the body. Q equal to plus or minus NE. N होची integer. E होची smallest unit of charge. By charge of the electron. So कहता है there is a multiply है. सेट में लिखा ला integral multiple माने गुणन integral multiple of certain smallest unit of charge. Where n is an integer, n equal to 0, 1, 2, 3 and e equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So ये जो फॉर्मूला रू गोटे बॉडी रो जदी किछि इलेक्ट्रॉन लॉस अछि बा गेन अछि आमे से बॉडी रो चार्ज केता हमें बाहर करि परिबा. फॉर एग्जांपल गोटे बॉडी रो मंदर 10 टा इलेक्ट्रॉन लॉस हे अछि बॉडी रो चार्ज केता होबो लॉस माने प्लस n बदले 10 e. सो बॉडी रो चार्ज होछि प्लस 10 e. गोटे बॉडी रो मंदर 50 टा इलेक्ट्रॉन लॉस हे अछि बॉडी रो चार्ज केते प्लस एन बदले 50 पके दवा ई 50 ई. गोटे बॉडी मंदर 200 इलेक्ट्रॉन एड हो गछ माइनस 200 ई. गोटे बॉडी मंदर 4000 इलेक्ट्रॉन एड हो गछ तो चार्ज केते हो क्यू इक्वल एड हो गछ माने माइनस 4000 ई. सो इडा होछ तमर कोन क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल. सो टोटल चार्ज कैरिड बाय बॉडी इज नॉट कंटीन्यूअस बट इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सर्टेन स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज. इडा होछ तमर कोन क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल. It means that a positively charged body can have a charge plus C, plus 2E, plus 3, etc. And a negative charged body can have a charge minus C, minus 2E, minus 3, etc. This is quantization of charge. That is, charge is said to have a discrete nature. So, a positive charge body, good electron loss होला, तार charge केता हो plus C. दी electron loss होला, charge केता हो plus 2E. तीन electron loss होला plus 3. चिन्ह good electron add हो गया minus E. दी electron add हो गया minus 2E. So लिखला so it means that a positive charged body can have a charge plus C, plus 2E, plus 3, etc. and a negative charged body can have a charge minus C, minus 2E, minus 3, etc. This is known as quantization of charge. That is, charge is said to have a discrete nature. It is a very important question. पचारियो quantization of charge कौन पचारियो. Next property ला number 4 ला तुम्हारा conservation of charge. Conservation of charge. Conservation of charge कौन कहूची ना the law of conservation of charge states that the total charge in an isolated system remains always constant. गोटे isolated system रो total charge टा सबले constant. Charge neither be created nor be destroyed. It can be transferred from one body to other body. Charge create होने के destroy होने कौन होची charge टा केवल गोटे बॉडी अन्य बॉडी के charge टा केवल transfer होची. गोटे बॉडी अन्य बॉडी कौन होची charge केवल transfer होची. This is known as quantization of charge. Sorry, this is known as your conservation of charge. In a law of conservation of energy पढ़चे energy can neither be created nor be destroyed. It can be converted from one form to another form. शक्तिर सृष्टि नहीं कि विनाश नहीं केवल गोटे फॉर्म रू अन्य फॉर्म को कौन होची गोटे फॉर्म रू अन्य फॉर्म को केवल शक्तिर रूपांतरित होची. आमे जदि जो पानी गरम करछे वाटर हीटर जदि स्विच ऑन करिवा करंट जदि पास करिवा से वाटर हीटर कौन होची पानी गरम होची. That means the electrical energy is converted into heat energy. So कौन होला एनर्जी रा गोटे फॉर्म को अन्य फॉर्म को रूपांतरित होला. एनर्जी क्रिएट होने की डिस्ट्रॉय होने केवल गोटे फॉर्म अन्य फॉर्म कौन होची एनर्जी ट्रांसफर होची कन्वर्ट होची. And the sum total of energy of this universe remains always constant. This is law of conservation of energy. So in law of conservation of charge कौन कहूची ना charge can neither be created nor be destroyed. It can be transferred from one body to other body. आम एग्जांपल नवा when a glass rod is rubbed with silk cloth. जदि आम जदि ग्लास रोड उडे आउ सिल्क क्लथ सहित रबिंग हम ताहले कौन हम कि इलेक्ट्रॉन ग्लास रोड सिल्क क्लथ ट्रांसफर हो. ग्लास रोड रे इलेक्ट्रॉन लॉस हो कौन हो ग्लास रोड टा पॉजिटिव चार्ज हम से सिल्क क्लथ इलेक्ट्रॉन गेन हो सिल्क क्लथ का नेगेटिव चार्ज हम. ग्लास रोड रे मनर 100 इलेक्ट्रॉन लॉस है ग्लास रोड चार्ज केता हम लॉस माने प्लस 100 ई प्लस 100 ई ग्लास रोड चार्ज.
सिंस सिल्क क्लॉथ रो चार्ज केते हबो सिल्क क्लॉथ रे इलेक्ट्रॉन ऐड होउछ दैट मींस माइनस 100 सो ग्लास रॉड रो चार्ज जति की प्लस 100 सिल्क क्लॉथ रो चार्ज मते सेति की माइनस 100 सेति कोन ले चार्ज लॉस होने गेन होने केवल गोटे बोर्ड रो अन्य बॉडी की कोन होउछ चार्ज ट्रांसफर होउछ को बोर्ड रो को बॉडी ट्रांसफर होउछ ग्लास रॉड टू सिल्क क्लॉथ को ट्रांसफर होउछ सो टोटल चार्ज इन दिस सिस्टम रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट दैट कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज so kon likhle edi when a glass rod is rubbed with silk cloth then the former acquires positive charge former on a glass rod acquires positive charge because of the transfer of electrons from it to the silk cloth while the silk acquires negative charge because of the surplus electrons gained by it so glass rod positive hochi electron loss करके sin silk cloth electron glass rod electron loss से positive charge होची sin silk cloth electron gain नहीं कोन होची negative charge होची and it is observed that the magnitude of positive charge on glass rod is equal to the magnitude of negative charge on silk cloth. Glass rod ର कोन होची जति magnitude रहउची positive charge रे silk cloth रे मते सेति negative रहउची मनर सब तुम कहली 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होची glass rod रो चार्ज केते 100 इलेक्ट्रॉन लॉस करी प्लस 100 silk cloth रे कोन हो 100 इलेक्ट्रॉन गेन करिगी माइनस 100 सो यार positive charge रे जति magnitude तार negative charge रे मते सेति magnitude thus the total charge in the isolated system of glass rod and silk cloth is constant that is rubbing does not create charge but only transfers electrons from one body to other body so rubbing कोन होची चार्ज क्रिएट करने की डिस्ट्रॉय करने केवल गोटे बॉडी अन्य बॉडी चार्ज ट्रांसफर होची को बॉडी ट्रांसफर होची ग्लास रॉड टू सिल्क क्लॉथ को ट्रांसफर होची so that is rubbing does not create charge but only transfers electrons from one body to the other and the charge that is gained by one body is lost by the other गोटारे चार्ज जते लॉस होची अन्यटारे चार्ज जते गेन होची सेति में चार्ज लॉस होने गेन होने केवल कोन होची गोटे बॉडी अन्य बॉडी के चार्ज ट्रांसफर होची hence electric charge is conserved यार चार्ज पॉजिटिव चार्ज जति की एतरे ग्लास रॉड रे पॉजिटिव चार्ज जहा सिल्क क्लॉथ रे नेगेटिव चार्ज मध्य सेति की ही रहउची सेति में कोन होची एडा कोस तमरो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज व्हिच इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट तो पचारियो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कोन आ गुडा एग्जांपल दियो बोली पचारि तुम एति लिखियो पड़ो में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आउट एग्जांपल दे परिबा हमर जो अल्फा डिके होचे सेथरे मध्ये कोन होचे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होचे अनदर एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज फाउंड इन द रेडियोएक्टिव डिके केस रे मध्ये तम चार्ज ता कोन होचे कंजर्व होचे एंड इन द डिके प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस दैट इज विदाउट एक्सटर्नल मींस बाय इटसेल्फ डिके प्रोसेस सब स्पॉन्टेनियस से एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड करूनी टेंपरेचर प्रेशर एगुडा पर डिपेंड करिवो नाही केमिति होची देखो suppose disintegration of the nuclei of heavy element with the emission of certain types of radiation for example देखो गोटे uranium 238 decays into thorium by emitting an alpha particle होची तमर helium nucleus so uranium 238 92 होची प्रोटॉन नंबर 92 तो यार चार्ज केते हला गोटे प्रोटॉन रो चार्ज होची e सो 92 टा प्रोटॉन रो चार्ज केते 92 e सो ई रिएक्शन प्रोसेस रे तम जो रिएक्टेंट साइड हला तार चार्ज होची 92 e सेमिति कोन होचे अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस होचे अल्फा पार्टिकल हीलियम 24 सो 92 रु 2 गला आ केते रहला 90 से 238 रु 4 गला आ रहला केते 234 सो के प्रोड्यूस हला डॉटर न्यूक्लियस प्रोड्यूस हला थोरियम 90 234 प्रोड्यूस हला सो ये जो रिएक्शन प्रोसेस हला एडी कोन होचे लेफ्ट हैंड साइड रे 92 टा प्रोटॉन अछि सो यूरेनियम रो टोटल चार्ज केते 92 e प्रति प्रोटॉन रो चार्ज होचे 92 e से थोरियम रो केता हबो थोरियम रो 90 e प्लस हीलियम रो 2 e 90 e प्लस 2 e केते 92 e सो लेफ्ट हैंड साइड रे मत चार्ज 92 e राइट हैंड साइड रे मत 90 प्लस 2 इक्वल टू 92 e सो रिएक्ट हैंड साइड रो चार्ज जते प्रोटॉन साइड रे मत चार्ज सेति में कोन एडी मत तमरा चार्ज टा कोन कंजर्व होछ एडी मत तमरा जो डिके प्रोसेस रे मत लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज कोन होची सैटिस्फाई होछ इट होल्ड्स गुड in the decay process also the law of conservation of charge holds good
So the amount of charge present before decay is 92e and this is equal to the amount of charge after decay, that is 90e plus 2e equal to 92e. Hence electric charge is conserved. It is a very important question. Law of conservation of charge kono one example दियो कहले तम एटा दब. Next property है तमरो transference of charge. मु तुम कहली चार्ज क्रिएट होनी डिस्ट्रॉय होनी, चार्ज केवल कौन होची गोटे बॉडी रो अन्य बॉडी की चार्ज टा ट्रांसफर होची. So charge is capable of being transferred from one body to other body if they are connected to each other through a conductor. आम जदि दीटा चार्ज रे बॉडी की गोटे कंडक्टर द्वारा आम जदि कनेक्ट करिवा हमर कोन हबो चार्ज ट्रांसफर हबो गोटे बॉडी रो अन्य बॉडी की. So following conditions holds good during transference of charge. So transference of charge रे किछि गोटे कंडीशंस हमको फॉलो हबागो पड़ियो. कोन कोन ना फर्स्ट हला transference of charge takes place due to transference of free electrons. चार्ज ट्रांसफर हबार मीनिंग कोन फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हेले ताको कुआ जो चार्ज ट्रांसफर होउछि. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हबार मीनिंग को कुआ जो चार्ज ट्रांसफर होउछि. चार्ज ट्रांसफर हला ग्लास रॉड टू सिल्क रॉड टू 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हला ताको कुआ जो जे एतिकी चार्ज ट्रांसफर हला कुआ जो एतिकी चार्ज ट्रांसफर हला कुआ जो 100e चार्ज ट्रांसफर हला यार प्लस 100e तार माइनस 100e दैट मींस 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होउछि. सीधा कुआ जो तम कोन ट्रांसफरेंस ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस ड्यू टू ट्रांसफरेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. सिंधी आउ कोन कंडीशन अछि next condition है electron tends to move from the body having lower war function to the body having higher war function. electron दा सबले lower war function body to higher war function body की transfer हबो. next point है transference of charge shall stop when the two bodies have acquired the same degree of electrification. गोटे बॉडी अन्य बॉडी के चार्ज केते समय ट्रांसफर हबो जेतलो दिरे जगह बॉडी रे सेम चार्ज हेजु. गोटारे मनर चार्ज अछि 4 कूलम आउटारे चार्ज अछि मनर 20 कूलम तो केते समय चार्ज ट्रांसफर हबो आमे दिरे जगह मिसि दियो 4 कूलम प्लस 20 कूलम 24 कूलम बाय 2 12 कूलम यार 12 कूलम तार 12 कूलम हे गेले चार्ज ट्रांसफर हवा बंद हेजु. दिरे जगह बॉडी रे समान चार्ज हे गेले चार्ज ट्रांसफर हवा बंद हेजु. नल सेते समय जेते समय दिरे जगह बॉडी रे सेम चार्ज हेनी सेते समय कोन चार्ज ट्रांसफर हबो. Next point है it is not possible to transfer the whole of charge from one body to other. केबे मध्य आमे गोटे बॉडी रो सब जगह चार्ज अन्य बॉडी के ट्रांसफर करि परिबा नाही. गोटे बॉडी रे 0 करके टोटल चार्ज रे अन्य बॉडी के आमे ट्रांसफर करि परिबा नाही. गोटे बॉडी रे मनर चार्ज 5 कूलम अछि आउडा रे मनर चार्ज मनर 20 कूलम अछि. गोटा रे मु 0 कूलम करके आउडा रे 25 कूलम करि परिबे नाही. So it is not possible to transfer the whole of charge from one body to other. गोटे बॉडी अन्य बॉडी की टोटल होल चार्ज रे केबे मध्य ट्रांसफर हे परिबो नाही. ता होछ कोन कोन कंडीशन अछि चार्ज ट्रांसफर है. सो एडा सब होछि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. फर्स्ट हला चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, नंबर 2 हला एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, नंबर 3 हला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, नंबर 4 हला कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, नंबर 5 हला ट्रांसफरेंस ऑफ चार्ज. एडा सब होछि चार्ज कोन और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कोन. वर्तमान हमें देखिबा टिके दिरा न्यूमेरिकल्स डिस्कशन करिवा. फर्स्ट पॉइंट तुम फर्स्ट न्यूमेरिकल पचारला a body has a charge of 3.2 10 to the minus 7 coulomb. Calculate the less number of electrons as compared to neutral state. गोटे बॉडी रो चार्ज एतिकी देछि केते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस हे अछि एली पचारछि. गोटे बॉडी रो चार्ज तुमको देछि केते 3.2 10 to the minus 7 coulomb. बॉडी रो चार्ज प्लस दैट मींस इलेक्ट्रॉन लॉस हे अछि केते इलेक्ट्रॉन लॉस हे अछि. पके दियो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल q इक्वल टू ne और ne इक्वल केते q by e. पके दियो 3.2 10 to the minus 7 डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 to the minus 19 2 into 10 to the 12 एती नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस हे अछि. सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट आउट क्वेश्चन पचारछि a glass rod is rubbed with a silk cloth. The glass rod acquires a charge of 19.2 10 to the minus 19 coulomb. से पचारछि ग्लास रॉड रो पॉजिटिव चार्ज देछि एतिके 19.2 10 to the minus 19 coulomb. से पचारछि फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय ग्लास रॉड. सेकंड क्वेश्चन फाइंड द नेगेटिव चार्ज एक्वायर्ड बाय सिल्क. थर्ड हला
इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क गोटे ग्लास रॉड ऑफ सिल्क क्लॉथ रबिंग है ग्लास रॉड रो चार्ज होची 19.2 10 to the minus 19 कूलम से पचाउची ग्लास रॉड रे केते इलेक्ट्रॉन लॉस हेगी अछि सिल्क क्लॉथ रो नेगेटिव चार्ज केते आउ ग्लास रॉड टू सिल्क क्लॉथ को जते इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होची किछि मास ट्रांसफर होची गेली पचाउची हम से फर्स्ट टाइम बाहर करिवा कोन कोन केमि हबो एटा सॉल्व केमि करिवा फर्स्ट आसला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय ग्लास रॉड हम पकड़ दियो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल Q इक्वल N और N इक्वल Q बाय E तो केता आसला 19.2 10 to the minus 19 by 1.6 10 to the minus 19 रे सॉल्व करले केता सो 12 सो ग्लास रॉड केतरा इलेक्ट्रॉन लॉस ही अछि 12 इलेक्ट्रॉन लॉस ही अछि से हम देखिचे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज रे ग्लास रॉड रे जति की चार्ज पॉजिटिव रे सिल्क क्लॉथ रे मते सेति की नेगेटिव चार्ज दैट मींस ग्लास रॉड रे जदी 19.2 10 to the minus 19 कूलम हो सिल्क क्लॉथ रे केता हो -19.2 10 to the minus 19 कूलम एटा हला 2 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन पचाउची इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क किसी मास ट्रांसफर होची कि पचाउची ग्लास रॉड टू सिल्क को केतरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होची 12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होची गुटे इलेक्ट्रॉन रा मास होची 9.1 × 10⁻³ kg ग्लास रॉड टू सिल्क क्लॉथ को 12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हला गुटे इलेक्ट्रॉन मास होची केते 9.1 × 10⁻³ kg इलेक्ट्रॉन मास जदी 12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो केते मास ट्रांसफर हो 12 × 9.1 × 10⁻³ kg दैट मीन्स केते हला 1.08 × 10⁻29 kg एति मास ट्रांसफर हो 12 × केते 9.1 × 10⁻³ kg इक्वल 1.08 × 10⁻29 kg सो एडा होची हमरो कोन व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हमें देखले आज आ प्रॉब्लम डे डिस्कशन कले इट इज अ वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन व्हाट इज चार्ज एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस बर्तमान हमें नेक्स्ट क्लास रे देखिबा व्हाट इज कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द चार्जेस वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कूलम्स लॉ तमरो कोन हो चार्ज रे यूज हो इलेक्ट्रिक फील्ड रे यूज हो पोटेंशियल कैपेसिटर सब थरे तमरो कूलम्स लॉ डा यूज हो ताको बेस ही आसी हला एडा हमें नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन करिया व्हाट इज कूलम्स लॉ देखिया किछि प्रॉब्लम्स हमें डिस्कशन करे थैंक यू वेरी मच गुड नाइट